So today we are going to talk about startup, right? कि ये स्टार्टअप होता क्या है, और लोग बोलते हैं ना न्यू आइडियाज, बिजनेस, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। जब तक आप नहीं जानोगे इसे, तब तक आपकी लाइफ भी एक स्टार्टअप है, पता है आपको? आप भी तो स्टार्ट ही कर रहे हो। स्टार्टअप, चाहे लाइफ की स्टार्टअप करो, चाहे बिजनेस का स्टार्टअप करो। ऐसा नहीं कि बिजनेस ही केवल स्टार्टअप है। तो ये स्टार्टअप होता क्या है? बोलते नया आइडिया लेके आया और आज की डेट में देखो करोड़ों अरबों रुपए का मालिक हो गया। ऐसा ही होता है ना, बट ऐसा रियल लाइफ में नहीं है। वो पिक्चर में दिखता है कि साइकिल से जा रहा है और स्टार्टअप किया और अचानक कार से उतरता है, फेरारी से, एंड समथिंग लाइक दैट। बट इन रियलिटी नथिंग इज लाइक दैट। उस सब कुछ होने के बाद भी रोज उतनी ही मेहनत करता है, उतना ही एफर्ट करता है, बल्कि उससे ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि चीजें इतनी दूर तक फैल चुकी होती हैं कि उनको अब वो छोड़ नहीं सकता। ही कैन एंजॉय हिज लाइफ कि जाके एकदम हॉलीडे मना रहा है, बल्कि चलो छोड़ो जाने दो, अब तो जो चल रहा है चल। तो ये स्टार्टअप होता क्या है? आज की डेट में स्टार्टअप हर कोई बात करता है, बड़ा ग्लोरियस फील्ड है स्टार्टअप। वाईएसआई इज आल्सो स्टार्टअप, राइट? Young Skill India is a government of India recognized startup which we got incubated from MCII, IIT BHU Incubation Center. तो ये स्टार्टअप होता क्या है? Let's start with Jyotsna. What do you mean by startup? Good morning, everybody. So as much as I know, talk with the mind of everyone. Yes. Throw those elements which can influence their mind. You have only 30 seconds, 1 minute. उसके बाद वो सुनेंगे भी नहीं। कौन ज्योत्सना? क्यों सुने? आगे बढ़ो। So startups are basically, or I'll say, like mostly a business initiative which people do when they have something new, or like most probably they do not even have a new idea, but they just want to start something of their own, and they take this initiative of expanding their ideas and earn money. But a lot of times there is this, like problem that people face because of their wrongdoings, of course. So as Sir was talking about a follower and a leader. So every follower to become a great leader should be a great follower, right? But most of these people do startup because they don't want to follow anybody, because they don't want to be under someone, and that's where the real problem comes. They do not want to be like under somebody, but they want to lead the business. They want to start something of their own, but they do not know how to work like that. So startups are, like the failure of starters are because of this, I believe. And that's that's my knowledge of startups. Thank you. No problem. Whatever you know, that is the only thing कि हमें उतनी किताब पढ़ाई गई है जितने से पास हो सके। बाकी और चीजें पढ़ के हम करेंगे क्या? वो टाइम वेस्ट हो गया। ये भी हमारा एक कांस्टेंट है माइंड का, पता है? हमें माइंड को कांस्टेंट करने के लिए ट्रेन किया गया है कि उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आए, फालतू की चीजें मत पढ़ो। और हम बाकी कुछ नहीं जानते उसके अलावा। और जो किताब में पढ़ते हैं उसको अगले पढ़ाई के अगले दिन ही भूल जाते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर था उस किताब में। फॉरगेट अबाउट। और कई बार तो भूल जाते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 का नाम भी याद नहीं रहता। बड़ी मुश्किल से याद आता है कि अच्छा ये भी था शायद, हाँ ऐसा ही कुछ था वो, राइट? ये ग्राउंड रियलिटी है, सबके साथ होता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं और मुझे सब याद है। मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि क्या पढ़ा है एक्चुअली। अंकिता, व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्टअप? नाम सुना होगा स्टार्टअप का। अंकिता प्रजापति, दो अंकिता है क्या? अच्छा, ये कंफ्यूजन रहता है। अंकिता प्रजापति। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग।
See, I just don't really much not know any idea about क्यों it. आइडिया नहीं है? आप ग्रेजुएशन में आ गए और आपको स्टार्टअप का एबीसीडी नहीं पता है, क्यों? किसके लिए, उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराओगी? गवर्नमेंट को, भगवान को, किसको? किसने जो है कि ये नहीं होने दिया आपके साथ कि आपको स्टार्टअप के बारे में पता चल पाए? मुझे लगता है सब भगवान का दोष है। नो सर। किस्मत खराब रही होगी कि कुछ पता नहीं चल पाया। कब ये सब स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? Actually, I also didn't try ever to know about it because there was means like we didn't use it ever before in our life. That's why. क्यों? क्योंकि आपने लाइफ को ही रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, लाइफ को ही लिमिट कर रखा है, तो आप कहाँ से जानोगे, राइट? और ये चीजें आपको इम्पैक्ट कर रही हैं आज की डेट में। कैसे कर रही हैं? हो सकता है कि आप किसी स्टार्टअप में इंटर्नशिप शुरू कर सकते थे, हो सकता है कि कोई स्टार्टअप ऐसा हो जो आपके इंटरेस्ट का हो सकता है कि आप स्टार्टअप में काम करते करते इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि 2 साल के बाद ही आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सको। ये चीजें आपको इम्पैक्ट कर रही हैं। फ्लिपकार्ट एक स्टार्टअप है, आप उससे सामान मंगा रहे हो, ये आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। अमेजन एक स्टार्टअप है, वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। जूम एक स्टार्टअप है जिससे आप बात कर रहे हो, ये आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। There are so many startups which are impacting your life. वैसा ही जो स्टार्टअप लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। उससे पहले किसी ने नहीं सोचा कि आपको प्रोफेशनल स्किल की भी जरूरत है। सब सोचते थे क्या कि क्या कोचिंग करा दो, बैंक की कोचिंग करा दो, की तैयारी करा दो बस, या सब्जेक्ट की कोचिंग करा दो। किसने सोचा? ये अनचार्टेड है, कोई कदम रखने को राजी नहीं था, क्योंकि ये अभी तक इस बारे में कोई ऐसा बना नहीं कि आप किसी को बोलो कि आप प्रोफेशनल स्किल, तो बोलेंगे वो प्रोफेशनल स्किल क्या होता है। जब 7 साल पहले मैं आया, आई स्टार्टेड इन वाराणसी, तो जब लोगों की बात करता था मैं वाराणसी में कि आई एम वर्किंग ऑन प्रोफेशनल एंड लाइफ स्किल, तो प्रोफेशनल स्किल क्या होता है? हम लोग तो अंग्रेजी वाला जानते हैं, जो हिंदी में लिखा रहता है अंग्रेजी बोलना सीखो बड़ा बड़ा, तो वही पता है अभी तक। तो बाकी ये प्रोफेशनल स्किल क्या होता है? तो प्रोफेशनल स्किल इस शहर को समझाने में मुझे 4 साल लग गए। इतने इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे। बट ठीक है कि एटलीस्ट अब बात करने लगे हैं। एनीवे, चांदनी कुछ पता है स्टार्टअप के बारे में? बोलो, क्या जानती हो? गुड मॉर्निंग। हाँ, आज इंग्लिश में ही बात करिएगा। इज एम आर लगा के या आवाज वर लगा के जो मर्जी है बोल दीजिए। क्या? जो कि लाइफ जो घटना होता है जिससे लाइफ बदलता है, ओ उसके बारे में बोलना है। बोले बोलते हैं सर। स्टार्टअप क्या होता है? कभी सुना है स्टार्टअप के बारे में? स्टार्टअप के बारे में तो सुना है, मतलब शुरू करना, स्टार्ट करना, ठीक है। फ्लिपकार्ट के से कोई सामान वगैरह कभी खरीदा है? अमेजन वगैरह से कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं? यूपीआई करती हैं? यूपीआई जैसे पेटीएम वगैरह करती हैं? नहीं सर। कुछ नहीं, साधु संत हैं। संसार से कोई मोह माया नहीं है, बस खाली किताब पढ़ाई और घर आना, बस यही ना? हाँ, सर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स से जैसे मोबाइल बहुत पसंद है, लेकिन अभी मेरे पास फिलहाल है नहीं। जूम पे क्लासेस किया है कभी?
यस सर। कब? अभी अच्छा, अभी जब कर रहे हो? ये भी एक स्टार्टअप हाँ। है। तो एक नया आइडिया आप कोई लेके आता है जो ट्रेडिशनल चीजों को ब्रेक करता है। कोई भी स्टार्टअप कोई ना कोई रूल ब्रेक करता है, कोई ट्रेडिशनल चीजों को ब्रेक करके एक नया रास्ता देता है, नई सोच देता है। ये काम ऐसे भी हो सकता है, दैट इज स्टार्टअप। एनीवे, वंशिका, व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्टअप? Good morning, sir. Very good morning. Be louder and be confident whatever you are saying. Be in your original format. ठीक है? Okay, sir. Hello. Sir, in my opinion, startup is created from unique idea. Like some people do this for their income, and some people do this for their interest. So startup is a unique idea. So sometimes it is good for us, like as you said, Flipkart, Amazon, or any other startups are good for us. Zoom is also a startup, but some startups are not good for us, like some social media apps or any other thing. So this startup in my idea. Okay. So Facebook you don't like, Instagram you don't like. These are also startups. No, sir, but this is not that much useful for us. Okay, okay, no problem. Yeah, Rashi, what do you mean by startup? क्या समझ है आपकी स्टार्टअप के बारे में? Shriyali and Swati, please open your camera. हाँ, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है राशि, ईयरफोन हटा दो। हाँ, बोलो। I think startup is a first stage of starting anything, new ideas, new thoughts, and many of startup can help we. And I think YSI also as a startup that help me improve myself, and other startups also help me in many sectors. I think it's my कहना। Thank you, sir. बस ठीक है, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट एक बार बात तो कर रहे हो आप आज से पहले तो कभी बात भी नहीं किया होगा स्टार्टअप्स को लेकर। तो ये है हमारे स्थिति देश की, कि हमें उतना ही पता है जितना हमें पता होना चाहिए, कि जितना एग्जाम में आता है, बस उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। और वो सारी चीजें हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही हैं। और मजेदार बात यह है कि इसमें सब शामिल हैं, कि नहीं 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 सब मत जानो अभी, तो कब जानोगे? एनीवे, यस अंकिता, व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्टअप? सर स्टार्टअप इज मेन टू आप बिगिन इतना समथिंग। लो स्टार्ट क्यों करते हो? एक एनर्जी क्यों नहीं लेके आते हो? मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग करना है करो, नहीं घर जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Today I'm going to talk about a new startup which I recently found, and there was an excellent advertisement from that startup. Anything you can talk about, create some interest. नहीं तो कोई आपकी बात को सुनने में इंटरेस्ट क्यों लेगा? खुद ही इंटरेस्टेड नहीं हो तो। Good morning everybody. I'm talking about the startup. Startup means to begin something, and it will affect on our life. For example, the Zoom and the YSI, Flipkart, Facebook, all affecting our life. And the good impact, its good impact is also on our life. For example, YSI helping me in developing my professional skills, and Zoom, through which I am today, I done my class. Very good. And so two startups are affecting your life. Yes, sir. Good. Okay, no problem. Yeah, Muskan, They are beneficial. Yeah, you want to say something?
Yes, sir. These are beneficial for us. Okay, no problem. Yes, Muskan, what is your understanding about startup? First of all, इको कर रहा है, आप good दो लोग morning. एक ही साथ हो क्या हॉस्टल में? कोई एक अपना क्या वो बंद कर ले, क्या नाम है, माइक म्यूट कर लो या हटा लो फॉर द टाइम बीइंग ईयरफोन. हाँ, बोलो बोलो मुस्कान. So first of all, a very warm good morning to each and everyone. In my opinion, startup means like when we start something new. It's mainly used for business purpose. For example, if I start any YouTube channel for my income, so it is called startup. And for example, like board company or any a big personality like Vinita Singh of Shark Tank India, she started her cosmetic product from sugar. So it is called startup. When you start something new. Very good. You have a good power to articulate, but you are lacking the ideas कि आगे क्या बोले. Start अच्छा करते हो, उसके बाद खोजने लगते हो शब्दों को, right? तो उस पे काम करने की जरूरत है. So it's not about like shabda. It's like I don't have proper knowledge about startup. That's why. क्योंकि आपने कभी कोशिश ही नहीं की. और उसके लिए भगवान दोषी है, सरकार दोषी है. Don't worry. No, sir. हाँ, और क्या, फिर घर वाले दोषी हो. चलो बनीशा, what is your understanding about startup? Good morning, everyone. So startup is basically an implementation of a new idea to start a new business, which can be either, it's totally dependent on the luck and hard work, which is needed a huge lot of capital and a team of investors to start at a great level. So that's it. Aditi. Good morning, everyone. So startup is starting something of your own with some new ideas, or in some cases with the common ideas even too, which impacts people's life. And so the ideas of startup is based on the person who is making startup. It is based on his conventions or the problem maybe he is facing in his life. So sometimes we start up things for our convenience, which in matter of time become a thing for other people also. Very good. You are very close to the point. It's a good point. Yes, Vaishnavi, what do you mean by startup? Sir, startup is a new program or ideas made by people. It may be if we are launching something new, then we get a positive response also or negative. So startup, if we take the example of School Mitra app, it was a new startup during the COVID time, and many of the children got benefited through this because it provided us many of the opportunities for the student. So it became beneficial for us. So according to me, sometime we get the good startups to start in the beginning. If it becomes the beginning is good, then our program which we have launched is become more and more useful to the people. Very good, very good. At least you are knowing about some of the startups and understanding the importance of those startups. Yes, Swati, what is your understanding about a startup? So startup is a new beginning of new ideas, or sometimes the common ideas which come up with to make human life more and more smooth and I think comforting the life. Sometimes like Flipkart, it is comforting our life so that we can stop. We can go on Flipkart and we can do whatever we can take whatever we want from our home only. So, and sometimes it helps in wasting time also, like Instagram and Facebook, which due to which we
generally waste our time. So startup is, I think, like that one. Okay, good. So you have both the views. Yes, Nivedita, what do you mean by startup? So good morning, everyone. So basically, as far as I know, a startup is an idea which is initiated by a person or a group of person to get an impact on the society or to build a revolution against it. For example, if I talk about the most prominent startup in education field nowadays is Physics Wala, which is started just like a YouTube channel, and now it has created impact on the life of a million of students. So this type of startups may bring a good change in life of a person, or many type of startups can also affect as well as on others' life in negative way. Good, also. at least you started recognizing startups. Yes, Shriyali, have you heard about word startup, and what is your opinion about it? Yes, sir. A very good morning to all of you. So startup is when a person or a group of people start a business association together, or someone does it alone. Startup is basically it's actually nowadays I'm seeing that startup are mostly based on the problem solving technique, which is really appreciative because they find a problem that majority has and they solve it, and they kind of find a solution that is applicable in those situations. I think that's why they are very useful to us and today's society. Also, startups are majorly bringing a change in our economic condition and improving our that what is called GDP. So I think it's very beneficial in all the ways. Okay. Yes, Aradhya, do you have any idea about a startup? आपका माइक बंद है आराध्या. Yeah, बोलिए. What is your understanding about the startups? Sir, in my opinion, the term startup is used at when we develop any idea which affecting directly or indirectly helping and affecting others' life. So it's called startup, like any business proposal ideas or any study. Okay, so startups are first related with the problem solving. स्टार्टअप क्या करता है कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है. तो व्हेनेवर देयर इज एन आइडिया देयर इज ए पर्पज. पर्पज क्या है? प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना, प्रॉब्लम को ईज करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बट इन ए डिफरेंट वे, इन ए डिफरेंट मैनर. ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच मेनी स्टार्टअप्स डज. सेकंड, generate revenue so that maximum number of people can also join and they can become employable or employed. Second, third, it should benefit to the maximum of the masses. वो गांव-गांव तक भी पेटीएम पहुंच गया है आज की डेट में. जब पेटीएम स्टार्ट किया था उसने, तो he never thought that ये एक दिन होगा. But now Paytm becomes synonyms of Xerox, like ना Xerox जैसे करते हैं. Xerox machine था. Photo state was the process and a thing. तो हम क्या बोलते हैं? Xerox कर दो. Xerox was the name of the machine. अभी हम क्या करते हैं? Paytm कर दो. Paytm is the name of the brand. काम क्या करना है कि पैसा ट्रांसफर कर दो. लेकिन हमारे बातचीत में क्या आ गया है? गूगल कर दो, फोन पे कर दो या पेटीएम कर दो. तो these brand become synonyms of the transaction of the money. ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है तो आप क्या बोलते हो? जूम कर लो, जूम अटेंड कर लो, यानी कि जूम से क्लास होगी. ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, जूम से क्लास होगी. तो द मोमेंट आई सेइंग जूम से क्लास होगी, एवरीबॉडी हाँ ठीक है जूम पे करते हैं. जूम पे करेंगे या गूगल पे करेंगे? आप यही पूछते हो ना कि क्लास किस पे होगी, जूम पे या गूगल पे. आप ये नहीं पूछते हो ऑनलाइन जाए की क्लास होगी. तो दिस इज द
दीज आर द चेंजेस जो रिसेंट पास्ट में हुआ है। कुछ भी खरीदना हो आज की डेट में, लोकल मार्केट में मत जाओ, पहले एक बार फ्लिपकार्ट पे देख लो क्या रेट है या कितने का मिल रहा है, आइडिया लग जाएगा। तो बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस यू गो टू द मार्केट एंड इफ दे आर गिविंग सम सेम स्टफ कि महंगा दे रहे हैं, तो बोलते नहीं नहीं, मैं तो वहां पे गए, अपना जो है कि नाप वाप ले लिया या देख लिया कि क्या कंडीशन है प्रोडक्ट का, कैसा दिखता है, एंड गॉट द आइडिया, एंड फिर आकर के फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर दे दिया। तो समटाइम्स फिजिकल आउटलेट्स बिकम अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली। तो ये हो रहा है आज की डेट में। तो स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि आपने आसपास कितनी तरह की प्रॉब्लम आप देखते हो, और उस प्रॉब्लम में से किस प्रॉब्लम को एक कोई प्रॉब्लम पकड़ो जिसे आप रियली दिल से सॉल्व करना चाहते हो। दूसरा, उसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है आपके पास, डिफरेंट तरीका क्या है, अलग क्या है आपके पास। तीसरा, सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है। हम एनजीओ नहीं है, वी आर ए बिजनेस एंटिटी। एनजीओ वाले तो बेचारे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि कोई देगा उनकी झोली में, फिर वो दूसरों की झोली में डालेंगे अपना कुछ बचा के। तो एनजीओ तो अपने ही खुद ही मांगने पे लगा रहता है, वो क्या ही किसी को देगा, राइट। तो अंडरस्टैंड कि आपको रेवेन्यू भी जनरेट करना है। क्यों? क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है सोसाइटी में, तब जाके इकोनॉमी चलती है। और इकोनॉमी नहीं चलेगी तो सब ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, सब वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे बैठ के आराधना ही करते रह जाएंगे। रोटी चाहिए ना, 2 वक्त की रोटी तो चाहिए। गरीबी इंसान को बहुत बुरा लगता है। तो अगर मैं आज आपसे ये बोलूं कि जो भी अभी दिमाग में आपके प्रॉब्लम आ रहा है, जो आप आसपास देखते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई आइडिया है क्या आपके पास? या सबसे पहले वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो करो कि इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहती हूँ। कोई डिफरेंट तरीका है आपके पास? प्रॉब्लम तो रोज देख रहे हो आप, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई तरीका समझ में आता है? क्योंकि कंप्लेन हम कर सकते हैं, सोल्यूशन देते वक्त हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि आइडिया ही नहीं आता। आप बोलो कोई भी आगे ज्ञान दे देगा कि अरे तुमको ऐसे पढ़ना चाहिए था, तुम्हारा नंबर कम आया। तो पूछ लो कैसे पढ़ना चाहिए था, तो बोले वही जैसे मतलब समझ में आया तुमको। तो ये स्थिति है बाकी लोगों की, कोई सोल्यूशन वाला काम नहीं करता। प्रॉब्लम ये है, ज्ञान सब दे देंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ा लो। कहां से बढ़ाए? जब तक आप खुद नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस जिंदगी में नहीं बढ़ सकता। जब तक आप बोलोगे नहीं, आपको बोलने आएगा ही नहीं। मैं ज्ञान देके चला जाऊं कि आप सबको बहुत अच्छा वक्ता होना चाहिए, सब वक्ता बन गए। जैसे अभी वीडियो देखते हो ना, बड़े बड़े वो मोटिवेशनल स्पीकर्स, जैसे ही वीडियो देख करके आधे घंटे के बाद पता चला कि डिप्रेशन वाली स्थिति आ जाती है। क्यों? क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं। मैं आधा घंटा ड्राइविंग करके आ रहा हूं ऑनलाइन, वाह व्हाट अ फ्रेश एनवायरनमेंट वाज देयर। अभी एक रियल में कार ड्राइव करना पड़े, आगे पीछे करना पड़े, तो बोलेगा अरे तो बहुत डिफिकल्ट टास्क। तो उसी तरह से लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है, अपनी प्रॉब्लम भी है, दूसरे की प्रॉब्लम भी है, सोसाइटी की प्रॉब्लम भी है। तो आपके पास एक आ गया पर्पज। आपकी लाइफ का पर्पज क्या है? आपकी लाइफ का पर्पज एक अच्छी सी सरकारी नौकरी, फिर एक अच्छा सा कार, फिर पड़ोसी से ज्यादा पैसा, और एक घर 2 BHK का फ्लैट। जॉब ओवर, खत्म कहानी। उसके बाद तो फिर आराम की जिंदगी। हालांकि लाइफ टाइम में कभी भी आराम नहीं मिलेगा, डोंट वरी, नॉट अ सिंगल डे यू विल फाइंड यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कुछ नहीं हो तो इमोशनल प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं होगा तो रिश्तेदार आके कुछ बोल के चले जाएंगे कि चाय में चीनी कम थी, उनके यहाँ तो ठीक से चाय भी नहीं पिलाते। नाश्ते पे बुलाया, खाने पे बुलाया, खाना तो अच्छा था लेकिन सजावट उतना अच्छा नहीं था। चलो भाई अब क्या ही करोगे। तो you cannot fulfill all the expectations, but you can serve the people to solve their problem up to some extent. तो मान लो कि अगर मैं आज आपको एक ऑप्शन देता हूं
कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, अपनी लाइफ से, दूसरों की लाइफ से, सोसाइटी की लाइफ से, और लगता है कि उसको सॉल्व करते करते आप बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हो। सोच पाओगे अभी श्रेयाली? कोई प्रॉब्लम है वैसे अगल बगल कुछ दिखता है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो? श्रेयाली? यस सर। प्रॉब्लम दिखता है अगल बगल? यस सर, काफी प्रॉब्लम दिखता है। कोई एक प्रॉब्लम बताओ कि तुम्हें अगर सॉल्व करना हो तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगी, और अपने बूते पे सॉल्व करना, अपने आइडियाज के बूते पे सॉल्व करना। ये नहीं कि वो नहीं किया, गवर्नमेंट ने ऐड नहीं दिया तो उसने पैसा नहीं दिया, ये सब कुछ नहीं होता। संसार में अकेले ही चलना पड़ता है। हम सब आत्मा है, संसार में अकेले आए, अकेले जाना है। गीता में लिखा हुआ है, मैंने नहीं कहा ये बात, ठीक है? So right now I do not have any ideas when you think about it. कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, या पड़ोस अड़ोस में, या सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम दिखती है कभी आपको? सर फिलहाल एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक आई नीड अ टेबल अटैच्ड, जिसमें टेबल पे आप हुक लगा के सामान टांग सको, तो उसकी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अच्छा, आप हॉस्टल में हो? हाँ यस सर। ओके, तो क्या कैसा टेबल चाहते हो कि जहाँ पे आप बैठे हो वहां पे ही, या हुक लगा हो? हाँ सर, वो एक अटैचेबल हुक हो जिसपे आप सामान टांग सकते हैं। तो मार्केट में मिलता है 15-20 रुपए का। आप जाके हुक वाला, बिना हुक वाला। बिना हुक वाला हुक चाहिए? मतलब वो जो नहीं, जो उसको तो लगाना पड़ता है ना, हैमर करना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, वो उसमें एक आता है जिसमें कि क्या कहते हैं कि एयर टाइट, पीछे वो प्लास्टिक का लगा रहता है, उसको आप दबा दो वॉल में तो वो चिपक जाता है वॉल में। सर जो मैंने लिया था वो तो उखड़ के गिर गया है चारों। अच्छा, तो मतलब क्वालिटी इशू आ रही है उसमें। तो आपने सर्च किया कि और भी कितने तरीके की इस तरह के चीजें आती हैं फ्लिपकार्ट पे? मतलब एकदम धुआंधार रिसर्च किया, बिल्कुल पागल हो गए, पैशन आ गया कि जब तक नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगी, वैसा आया कि अरे छोड़ दो, नहीं मिलता, ही संसार ही गलत है, सब दुकान वाले ही बेकार है? नो सर, अभी तो वो वाला हुक मैंने देखा, एक नया तरह का, वो क्लिप की तरह होता है, उसको आप ऐसे टेबल पे लगा दो जैसे हुक होता है। अगर जुनून होता श्रेयाली तो आपको यहाँ से लेके अमेरिका तक पता होता कि किस तरह के हुक मिलते हैं। सर मुझे स्टार्ट थोड़ी करना है, नहीं करना है, लेकिन किसी चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जुनून और जज्बा जिस दिन आ गया, उस दिन आपके अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जुनून और जज्बा होना चाहिए। आई एम जस्ट शेयरिंग की एक एबिलिटी है। हम लोग क्यों निग्लेक्ट कर देते कि अरे हमारे काम की थोड़ी ये फालतू में टेंशन लेना। लेकिन अगर वाकई तुम सॉल्व करना चाहती हो सकता है तुम सोचती कि यहाँ पे तो कम से कम 150 ऐसे रूम है, सबके पास यही प्रॉब्लम होगी, यानी कि 150 लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। तुम इनफॉर्मली लोगों से बात करना शुरू करती कि क्या इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? कुछ कहते हैं अरे नहीं, हम तो काम चला लेते हैं, हमने तो किल ठोक दिया, उसी से काम चल जाता है। कुछ लोग को पता भी नहीं होता कि इसकी जरूरत भी है। तो हो सकता है कि केवल 5 लोग ऐसे मिलते जो कहते हैं हाँ तुमको अगर पता चले तो मेरे लिए भी लेते आना। तुम गई मार्केट से लेने के लिए और मान लो कि वो मिल रहा है 20 रुपए का, तुमने ले आके 25 रुपए का उनको बेच दिया, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यानी कि 5 लोगों को बेचा या 10 लोगों को बेचा तो 50 रुपए का तुम्हारे आने आने का कॉस्ट निकल गया। And you bought for yourself and you help other people as well. This is the business. मोमोज, वाओ मोमोज या कुछ ऐसा मोमोज है, वो किसी इंस्टीट्यूशन में था लड़का, तो वो क्या करता था कि मतलब हॉस्टल में मोमोज बना बना के बेचता था। फिर बाद में धीरे धीरे वो उसका बिजनेस बन गया, शायद 500-600 जो भी करोड़ का बिजनेस है। तो लोगों ने कुछ स्टार्ट किया इसी तरह से। हालांकि अब बोलोगे कि सर मेरा तो दिमाग पढ़ाई पे ही लगता है, हमें तो बिजनेस करना नहीं है। किसी को बिजनेस नहीं करना है, लेकिन क्या पता कि कब कल आपकी लाइफ में चेंज आ जाए। वो जुनून चाहिए, और वो जुनून हर जगह काम आएगा, आपकी पढ़ाई में भी काम आएगा। तो कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, इतनी जगह सर्च कर लिया और उसके बाद 2 मिनट में समझ में आ गया। किसी दूसरे को समझाना है, उस टॉपिक पे वीडियो बना करके भेज दिया और बोल दिया कि हाँ भाई लो, and you started मतलब people started liking and all those things.
तो कुछ डिफरेंट करोगे तो डिफरेंट बनोगे, कुछ डिफरेंट नहीं करोगे तो एवरेज रह जाओगे, और एवरेज खुश रहो। एवरेज लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनको किसी चीज से कोई परवाह नहीं होती, बस एक ही चीज से वो डरते हैं कि कोई उनके बारे में बुरा भला ना कहे। सोसाइटी से बहुत डरते हैं वो। कोई कह दे कि तुम अच्छे हो, वो अच्छे बन जाते हैं। कोई कहे कि तुम बेकार लग रहे हो, तुरंत अपना चेंज कर देंगे माइंड से। ज्योत्सना, आर यू फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, अगल बगल अड़ोस पड़ोस, जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, या कोशिश किया है या सोचा है? I have not really thought about it before, but now that we were talking about it, so there's this problem that we all are facing in our hostels, and that is of food. There was a tiffin system we were getting food from, but the food was so adulterated, or I don't know what was the problem with it, that we fell sick, and that was intense. We were like having diarrhea for straight a week, and like we were all almost dehydrated, and the situation was so bad that we could not even walk properly. And a lot of people here also, I've talked about it with the people that live in the lower section here of my hostel, and they too are facing the same problem. And we were just discussing about it, and I thought of my mother. And I talked to her, and she was like, if I was there, I would have made food for everybody and started my own business. And I was like, yeah, you should have absolutely done it. You would be you'd be printing money because you're such a good cook. And people don't really what I have faced in the tiffin system thingy, that people do not want to make food for nourishment, like for the students. You are making food for the students mostly, but you do not really think about the students. You just think about the money that they were giving food in a polythene plastic bag type of thing. And it must have been adulterated. Just the warm, you are putting the warm food in a plastic bag, and then you're carrying it for 4 hours or 5 hours. So it's really toxic for health. And I believe that if I was there and my mother was there, we would have done it a lot, like finely and thinking about the hygiene and the health as well. But of course, we did not really take it into action. But now that we were talking about it, I think I would like to give it a consideration. वेरी गुड गुड। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और हर जगह है ये प्रॉब्लम, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज है कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, उसकी नौकरी जब चली जाती तो एक ही बिजनेस सोचता है, चाय की दुकान, फूड बिजनेस खोजना है। क्यों? क्योंकि वो डेली रूटीन की चीजें हैं जो तुरंत पैसा जनरेट कर सकती है। ये ग्राउंड रियलिटी है। We will work on that. Don't worry. Yeah, Swati, good that you are raising the hand. इतने brave कब से हो गए आप लोग? What is the problem? क्या problem है and क्या ideas हैं आपके पास? Actually, when I went to my village, I saw there. I have seen there. There's lots of people who have their smartphones, who have their own apps, but they don't know how to use it. Okay. So there is a common app which have that feature that everyone along with all the apps, there is the features to give how to use it correctly, because sometime in Paytm they don't know how to use it. Just because that they transfer money to different person. Okay. In different ways. So in that app there should be the solution is that every app should have their own problem solving techniques, along with how to use it, along with proper instruction. Okay. So I think this is my idea. हाँ ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया। हो सकता है इसमें बड़ा बिजनेस छुपा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यू हैव टू एक्सप्लोर इट मोर। यस वंशिका। Yes, sir. So I had a problem when I came to hostel. I doesn't have enough space for my stuff. Like my bed or my book stand
all the things are so congested. Yes, right. Sorry, sir. So I don't have enough space for my stuff. So I just changed the direction of my book stand, and I have so much of space. So I want to say that if there is a problem, so solution is also there. We just have to think about it. Okay, good. So you can work on maybe work with those people who are already in a furniture business, and you can coordinate with them, and you can provide the spacious furniture for the hostelers at a low cost. This could also be a business. Yeah. Sir, no, sir. I have idea. So like if I'm talking about society problems, so there is a poverty. So I want to work on that. Like every year on my grandmother death anniversary, we distribute blankets. So surely I will extend it on large scale. Very good. So you have to open an NGO, right? Because that is a free of cost job. No problem. Yes, Vanisha. Yeah, tell me, any problem have you experienced which you want to solve now? आप अपना माइक वो निकाल दो, ऐसे ही बोलो, because it's disturbing. Yeah. ईयरफोन निकाल के बात करो. हाँ, ईयरफोन निकाल दो. ईयरफोन की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, हिल रहा है ना. क्या चीज? बिना ईयरफोन के आप बोलिए. ईयरफोन निकाल दीजिए. So she's saying everyone's sleeping in the room, so they might be disturbed. That's why they're putting the earphone on. अरे डोंट वरी, 2 मिनट के लिए बोलो कि डिस्टर्ब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं. बोलो. Sir, I personally don't have any problem, but I have seen a major issue in the society these days, that the condition of transgender in this society is very bad. So I've thought to generate some employment for them. For example, there are lots of delivery boys from Zomato, Swiggy, Amazon, Flipkart, etc. So I want to start something only for them, so that they can get employment. Okay, so there is a problem. That problem is their skill set also. Problem is their the basic understanding whether they are also looking forward for such kind of job or not. Yes, or they are happy with their own profession, or they have a limitation कि हमको तो कोई job दे ही नहीं सकता है. तो बहुत सारे challenges हैं आपके पास. Good, all the best. Yes, Aditi, do you have any idea? So not as such now. I think of any such. Okay, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगल बगल कभी भी नहीं देखा कोई प्रॉब्लम? No, so definitely I have some problems. For now, if I think of, so there is a major issues in the prices of notebooks that we bought from stores. There is huge margins, like on Zomato and Swiggy, like on food items, on cosmetics, we get huge discounts and offers, but there is no as such discount and offers for students in this area for notebooks, registers. So I face this issue, but right now I don't have any idea to think of to cure it. No, there is a option. जब आप जाओगे तो सुबह सुबह जो अखबार आता है उसके साथ white pages आते हैं जिन पे लपेट के अखबार आता है, और जो अखबार बेचने वाला होता है बाद में उसको वो कटिंग करके रफ कॉपी बनाता है, and they sell it at a quite lower cost than the market price. So that is also one area, क्योंकि white page चाहिए आपको लिखने के लिए. And you can collect from them, or you can coordinate with them, and you can coordinate with the printing machine जो सिलाई करते हैं या binding करते हैं, and create your own brand. Yes, right? but there is no
there is no much awareness regarding this topic. Many students don't know about this. So it's your job ना, बिजनेस आपको करना है, अवेयरनेस आप क्रिएट करोगे. उस स्टूडेंट थोड़ी हर चीज पहले से थोड़ी बनी बनाई होती है. प्रोफेशनल स्किल के बारे में कोई अवेयरनेस है क्या आपके पास? पहली बार नाम सुना होगा, बोले ये क्या है, बोले हमको नहीं चाहिए, हमको तो बस तैयारी करनी है, IAS PCS की तैयारी करनी है या बैंकिंग की तैयारी करनी है, बस इतना ही पता है अपने को. ये नहीं पता है कि उसके लिए स्किल भी चाहिए, उसके लिए कॉन्फिडेंस भी चाहिए, उसके लिए दिमाग में सोच भी जनरेट होनी चाहिए. तो जब खुद ही नहीं सोच पाते हो, मैंने किसी से सवाल पूछा, कहीं जगह बैठा था, 40-50 बच्चे बैठे थे, वो सोच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि आज तक उनको सोचने के लिए कभी किसी ने मजबूर ही नहीं किया. किताब में पढ़ के आए, वो बोल दिया, एग्जाम में दे दिया, वही उनकी सोच बन गई. तो उनकी सोच हमेशा के लिए खत्म कर दी गई. आपके पास कोई सोच नहीं है, बुरा मत मानना. एक टॉपिक पे बोलना होता है तो आप बहुत मेहनत करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि कभी सोचा ही नहीं. ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको समझो. एनीवे, गुड आइडिया. अंकिता, बोलिए. Yes, sir. In this time, we are facing with the winter problem, weathering, cold. And for this, there should be a heater of very low voltage. Because the heater in the market, which is not allowed to use in the hostel because of very high voltage. So there should be an heater of low voltage. Okay, never mind. Okay, so now quickly let me understand when we are talking about this unusual topic, which many of the students may not be, liking or understanding. So जैसे आते हैं ना प्रसाद चढ़ाने के, देखें मंदिर में क्या हो रहा है आज, बोले पसंद की चीज नहीं है, तो see the attitude कि if they want to leave, so they should tell that yeah, I take the permission. बट अगर ये बेसिक एटीट्यूड भी नहीं सीख पा रहे हैं अभी, तो कहीं पे जॉब के लिए जाएंगे तो कितनी देर टिकेंगे, या उनका फ्यूचर क्या होगा, आप पहले से डिसाइड कर सकते हो. तो दे आर गोइंग टू फेल इन देयर लाइफ सो मेनी टाइम्स. You don't have a patience to learn something new. You don't have a patience to listen something new. तो आपकी सक्सेस स्टोरी पहले से फिक्स है, डोंट वरी. एनीवे, व्हाट वाज द लर्निंग फॉर द डे, ज्योत्सना? So for me, the learning was, of course, about startups. For everybody, of course. We all have heard about it. Maybe some of us have not, but we all had a general idea of what startup was, but we were not really, aware about the insights and I have never really thought about Zoom or, Flipkart or Amazon as they were startups, because I had this general thought, I don't know why, but I had this thought that startups were something small, and something that has a business that has just started, which has not really made a name or something of that sort. So that, of course, that was cleared off of my mind. And now I'm constantly thinking about a startup. Meanwhile, the people were talking, and I think maybe a lot of us might end up starting, doing a startup. At least now you are, कहते हैं ना कि up to date तो हो. Yes. किसी सोसाइटी में अगर कोई स्टार्टअप पे बात करेगा तो ऐसा नहीं कि डंब की तरह चुपचाप खड़े होके देख रहे हो कि अरे यार ये क्या बात कर रहे हैं, डर के मारे हाथ पांव फूल गए. So it should not be the case. Yeah. Yes, Vanshika, tell me about what was the learning for the day. So, of course, I also learned about startups, and I learned that we should also create, we have idea, but we can't express it. So this is the learning. Rashi, what was the learning for you? So today I learned about startup, and I after the joining this session, I feel that I also start this startup. My ideas, my thoughts, startup. Very good, very good. Yes, sir. Yeah, Ankita, what was the learning? So today's I learn about the startup, and I will find the problems and the solutions, and I will try to find. At least आज की बात अब अपनी तरफ आप प्रॉब्लम को देखोगे तो सोचना शुरू करोगे कि इसका सलूशन क्या हो सकता है,
क्या ये बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है क्या? क्या हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं क्या? तो दिमाग एक अलग लेवल पे चला जाएगा. Yes, Vaishnavi, what was the learning for the day? So for me, if we want to start, if we have a problem, then we have to find a solution to the problem, because problems can be anywhere in our life. So if we have a solution, then we can change the world also, and we can get a business idea too. Very good. Yes, sir. Nivedita, what was the learning for the day? So today, I guess I have learned about the topic which I have never thought that it's also a matter of concern for me. And then never thought about what are startups and is really useful for me too. But today I understand that yes, it plays a very important role in our life in problem solving. Okay. Vanisha, what was the learning for the day? Sir, in today's session, we had a basic idea of startup. What is startup? And instead of sitting simply and thinking of a problem in the society, we forced ourselves today to find a solution for that. Aditi, what was your learning? So of course it was the same, that having the basic concept of startups and looking for the problems around us, and also looking for the solution, not only the problem. It will change your attitude towards your real life. अब आप प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं हो, अब आप सॉल्यूशन का हिस्सा बन गए, या सडनली यू बिकम टेबल के आप इस तरफ आ गए. तो जब टेबल के इस तरफ आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ आ गया ऑटोमेटिकली. अब प्रॉब्लम आपको डराएगा नहीं, सॉल्यूशन आपको एक्साइट करेगा. Shriyali, what was the learning for the day? So I think for me, it is working on the solution only, and thinking about the mass first. Thinking about the mass, yeah, marks. Yes, the mass. When you're solving a problem, then you should firstly thinking about the mass. Okay, you are thinking about other people as well, right? So it's a good part, and I'm really happy कि ये पहला seed था. Basically, my intention is something different. So I just implanted seed of this idea कि startup आपको पता होना चाहिए. Otherwise, you will not be accepting the ideas. So anyway, it was good session. Thank you very much for the day.